Hi, good evening, Jai Hind. Welcome to all the teachers for joining us for this NEP series, the third day of the webinar. We took two important days in understanding learning outcomes and assessment, and especially formative assessment. And today we have another very interesting topic that we will cover under prioritizing learning outcomes for education. Thank you all for joining us on the webinar series of Teacher App powered by Bharti Foundation. The Teacher App by Bharti Foundation is a platform designed to empower teachers, school leaders, and educationists with high quality content and engaging resources. We believe that happy and energized schools are key for school transformation. We promise you an amazing experience with our quality courses, engaging learning bites, interactive webinars, especially through experts on the education field, and many other resources. My name is Deboshri. I am your host for all the 3 days. Along with me, my colleague Ankita and Vijay are present to support us for every technical difficulty that will come across. Um, just setting some general information, we will try कि इस वेबिनार को हम जितना इंटरेक्टिव बना सके हम उतनी कोशिश करेंगे. जो हमारे स्पीकर है वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ वार्तालाप करते रहेंगे. सो प्लीज आप अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस, अपने जो भी फीडबैक है वो हमें चैट सेक्शन पे बताते रहे. साथ ही आप क्वेश्चन एंड आंसर टैब का भी यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स तक पहुंचाने के लिए. और साथ ही कुछ पोल्स होंगे, उन पोल्स को आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए. पिछले 2 दिनों में हमने बहुत सी नई चीजें देखी, सुनी, समझी. हमने ये समझा कि लर्निंग आउटकम को हम क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते और क्यों उसमें बहुत ही क्लियर एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने चाहिए एक टीचर के लिए. हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट के बारे में भी समझा कि कैसे वो दोनों अलग है. एंड आप लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, एंड आई एम श्योर एज टीचर्स नो मैटर व्हाट हमें बहुत ज्यादा मेहनत, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है. सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि जो टूल्स या जो अंडरस्टैंडिंग इस वेबिनार से आपको मिले वो आप अपने क्लासरूम में जरूर इस्तेमाल कर सके. आज लर्निंग आउटकम के अंदर ही हम एक नए विषय के साथ आपके पास आए हैं. और बस विषय ही नया नहीं है, बट आज हमारी स्पीकर भी नई है. पिछले 2 दिनों में अनिरुद्ध शास्त्री ने हमें बहुत ज्यादा he was there with us to explain us throughout the session. Today, from his team, we have Ritu Lamba. She's also the co-founder of Things Education. Welcome, Ritu. And it's really grateful to have you here. Ritu is a graduate from Harvard Graduate School of Education. She brings experience from various sectors of education, right from working with government schools uh, and students from Pune to creating learning aids and educational corporates for private schools around the world. She and Anirudh has actually done some very fabulous work with things in education. And we are very fortunate to have Ritu with us today. Ritu, the stage is all yours. Thank you, Debashri. Is my voice clear enough? Is it audible? Yes, it is. Okay. Let me just share the screen. Yeah. Okay. Hello everyone. Thank you for joining. हम immediately अभी शुरू कर देते हैं. As soon as the screen is shared, let's start. आज के वेबिनार का टॉपिक बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्टिव लर्निंग है. NEP 2020 talks a lot about experiential learning, and we are going to talk about that, but एक नया टर्म हम यूज कर रहे हैं, एक्टिव लर्निंग. और आपको समझ में आ जाएगा थ्रू दिस वेबिनार कि हम उसे एक्टिव लर्निंग क्यों बोल रहे हैं. सो आई जस्ट वेट फॉर द स्क्रीन टू कम अप एंड देन वी कैन स्टार्ट.
ओके, थैंक्स देवश्री। um सो जैसे मैं बोल रही थी, वी आर फोकसिंग ऑन एक्टिव लर्निंग टुडे। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसे एक्टिव लर्निंग क्यों बोल रहे हैं। बट जस्ट टू रिकैप, फर्स्ट वेबिनार में हमने लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात की, फीचर्स क्या है लर्निंग आउटकम्स के, उन्हें प्रायोरिटाइज कैसे करना है, उसका थोड़ा रिकैप हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर देंगे। और येस्टरडे कल हम ये देखा कि चेक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होते हैं, एंड हाउ आर दे कनेक्टेड टू लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे ही हम फॉर्मेटिव असेसमेंट्स बनाते हैं। तो उसके बारे में हमने कल बात की थी अनिरुद्ध के साथ। आज हम एक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये जो एनईपी ने बहुत ये टर्म्स यूज किए हैं, बताया है कि हमें यूज करना है क्लासरूम में, हैव टू डू एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद स्टूडेंट्स, बट इसका मतलब क्या होता है। सो वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इन टूडेज वेबिनार। देवश्री, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जस्ट टू रिकैप योर नॉलेज, हम एक पोल क्वेश्चन अभी फ्लैश करेंगे स्क्रीन पे। प्लीज रिस्पॉन्ड ताकि हमें भी फीडबैक मिल जाए कि आपको प्रीवियस सेशन से आपको क्या याद है, देन वील डिस्कस दैट क्वेश्चन। Requesting all teachers to participate. टीचर्स, अगर आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आप वो भी हमें चैट सेक्शन पे बता सकते हैं। वी कैन शेयर दैट क्वेश्चन विथ यू और आप चैट पे उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आई थिंक सबको दिख रहा है। um, yeah, Ritu, we can close the poll. Yeah. ओके, ग्रेट। तो क्वेश्चन ये था कि व्हेन कैन वी से दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। हम ये कब कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कुछ नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट या नया स्किल। First option था when teachers have covered the topic. Now only 3% of you have said that this is when students have understood the topic. Um, अगर हम, इफ वी एज अ टीचर, हमने एक टॉपिक कर दिया, पढ़ा दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने टेक्स्ट बुक चैप्टर पढ़ा लिया उन्हें या पढ़ लिया क्लास में, दैट डजंट मीन कि बच्चों को समझ में आया। Learning and understanding is different from the teacher covering the topic. So whenever we think about understanding, जब भी हम understanding के बारे में सोच रहे हैं, we have to think कि बच्चों को समझ में आया या नहीं, that is the question. ये नहीं कि टीचर ने कवर किया या नहीं. So that option is not correct. Second one is when students are highly engaged in the classroom discussion. Um, बच्चे बहुत इंगेज हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लर्निंग आउटकम मीट हुआ है। सो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स आर डूइंग थिंग्स, सिर्फ ये देख के कि बच्चे क्लास में कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीख रहे हैं। उसमें बहुत फर्क होता है। Fourth option is कि when students have an opinion regarding a topic, that is also not understanding, because हमारा opinion बिना knowledge के भी हो सकता है, बिना understanding के भी हो सकता है, और वो opinion गलत भी हो सकता है। So just because students have an opinion, अगर उनकी राय है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें उनका learning outcome meet हुआ है। जो थर्ड ऑप्शन है, आपने 68% ऑफ यू हैव सेड व्हेन स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक एंड स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट इट, उन्हें बहुत स्पेसिफिकली समझ में आ गया है, वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो कंपेयर कर पा रहे हैं, कुछ कॉन्क्रीट वर्ब है जिसे वो मीट कर पा रहे हैं लर्निंग आउटकम में,
that is when we say कि students have understood the topic. Again, very important for today's session because हम active learning की बात कर रहे हैं. But second option में हम बोल रहे हैं कि just because students are doing things, सिर्फ ये नहीं important है कि वो हाथों से कुछ कर रहे हैं. That is not learning. That is not understanding. So what is active learning then? If it is not that, active learning क्या है फिर? आज हम ये डिस्कस करेंगे. देवश्री, we can move. Okay. तो रिकैप के तौर पे हम, आप ये स्लाइड देख लीजिए. फर्स्ट वेबिनार और सेकंड वेबिनार में हमने बेसिकली ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे. पहले तो लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं. लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट फोकस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू समथिंग, कुछ कॉन्क्रीट कर पाएंगे. ये नहीं कि वो अंडरस्टैंड करेंगे, ये नहीं कि वो लर्न करेंगे. वो कॉन्क्रीट वर्ब्स नहीं है, हमें दिख नहीं पाएगा कि वो have they understood, have they learned. So a learning outcome is focused on the student and we should be able to see what they're doing. Student will be able to draw, student will be able to differentiate, student will be able to compare, students will be able to explain. कुछ concretely अगर वो कर पाए, that is very important in a learning outcome. उसके अलावा लर्निंग आउटकम्स हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक. टॉपिक्स बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत सारे स्किल्स होते हैं. अगर हम ब्रॉडली कह दें कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड रेवोल्यूशन और जस्ट अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम, बहुत ब्रॉड है. सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं और ज्योग्राफी टीचर्स को पता होगा कि क्या क्या होता है सोलर सिस्टम में. तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम स्पेसिफिकली उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं. व्हाट शुड स्टूडेंट्स लर्न. And very importantly, learning outcomes should not focus on the process. ये नहीं कि वीडियो देखेंगे या कुछ एक्टिविटी करेंगे. Learning outcomes have to focus on what will students learn. वो सीखेंगे क्या finally. That is the most important. Secondly, we talked about prioritizing learning outcomes. कुछ learning outcomes ऐसे होते हैं जो बहुत important. They are very important for student learning, for understanding the subject, for understanding things in the real world. अगर वो समझ जाए तो बाकी सारा सब्जेक्ट का काफी आसान हो जाएगा. दोज लर्निंग आउटकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर सम लर्निंग आउटकम्स जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एंड वो हम होमवर्क या सेल्फ स्टडी या फ्लिप लर्निंग के मेथड में दे सकते हैं. सो वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज लर्निंग आउटकम्स एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स. तीसरा हमने ये डिस्कस किया था कि स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अबाउट वो रट्टा मार के आ गए तो इज दैट अंडरस्टैंडिंग. नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. हमने एज अ टीचर वो टॉपिक सिखा दिया, इज दैट अंडरस्टैंडिंग. दैट इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज वी हैव टू सी कि बच्चों ने समझा या नहीं. वो कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके दे आर डूइंग सम प्रोसेस, जैसे लॉन्ग डिविजन, बिना बिना ये समझे कि एक्चुअली डिविजन क्या होता है. दैट इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. एंड सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वी एज अ टीचर हमें दिखना चाहिए कि वो क्या समझे हैं. आउटसाइड वी शुड बी एबल टू सी व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग. एंड सो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी मेड विजिबल बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. और कल के वेबिनार में हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग होता है, दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि बच्चों ने कितना समझा. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑल दीज क्वेश्चन जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, जो हमारे चेक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, दे शुड बी कनेक्टेड टू द लर्निंग आउटकम. तो ये इस बेसिस पे हम अभी थर्ड वेबिनार का टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज व्हाट इज एक्टिव लर्निंग. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. सो दीज आर द हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं आज के. Participants will be able to define active learning experiences क्या होते हैं. You will be able to differentiate between doing activities and active learning. ये दोनों अलग चीजें हैं. And very importantly, जब हम active learning experiences कर रहे हैं क्लासरूम में, क्लासरूम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय क्लासरूम मैनेजमेंट इन दिस केस. सो वी विल वॉच, हम एक दो वीडियोस देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस about classrooms. Let's not move to the next slide yet. Just give me a minute. नहीं, can we go back to the previous slide? Thank you. वीडियो देखने से पहले मुझे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है
ये जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है, participants will be able to differentiate between doing activities in class and active learning experiences. अभी आप चैट में आप अपना ओपिनियन बताइए कि what do you think is the difference between doing an activity and active learning? क्या कुछ फर्क है इन दोनों में, और अगर है तो क्या फर्क है? इफ यू कैन टेल अस इन चैट, हम आपके रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं तो हमें भी पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो. सभी टीचर्स को आई होप ऋतु का क्वेश्चन समझ में आ गया. वो आप सभी को जो सेकंड पॉइंट है उस पे डिफरेंस जो भी आप समझ पा रहे हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं. Okay, good, very good responses. Many teachers are saying कि it's different doesn't mean सिर्फ अब वो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो समझ रहे हैं. Active learning refers to learning. Yes, it is different learning through practicing. Okay, it is different. आप बोल रहे हो डिफरेंट है, बट इट विल बी नाइस इफ यू कैन से कि क्या डिफरेंट है, इसमें क्या फर्क है बिटवीन एक्टिविटी एंड एक्टिव लर्निंग. Doing an activity means only following teachers' instructions, and active learning means they can use the conceptual learning in their life out of classroom as well. Okay, very nice. Involves all senses. Activity means only performing. These are very good answers. These are very good responses. Doing activity teacher centered, active learning student centered. Okay, great. Hands-on learning is doing activities. Yes, that is correct. Doing activities is very often hands-on learning. Active learning is understanding the topic taught. Okay. Okay, great. ठीक है, तो आई थिंक these आर ग्रेट रिस्पॉन्सेज और बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ एवरीवन अग्री, सबको ये लग रहा है कि एक्टिव लर्निंग और एक्टिविटी में बहुत फर्क है. सो अभी थोड़ा इसमें डीप डाइव करते हैं. बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको थोड़ा एक आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ ये वीडियो का जो हम देखने वाले हैं. इस वीडियो में आप थोड़ी चीजों पे फोकस करना. व्हेन द वीडियो इज प्लेइंग, थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस. वन, पहले वीडियो में आपको ये सोचना है कि जो टीचर है इस वीडियो में, व्हाट इज दैट टीचर ट्राइंग टू टीच, व्हाट इज द टॉपिक दैट द टीचर इज ट्राइंग टू टीच. सेकेंडली, वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं टू द स्टूडेंट्स, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन. एंड आर द स्टूडेंट्स थिंकिंग, that is the fourth question. So what is the topic, what are the instructions, students क्या कर रहे हैं, and students सोच क्या रहे हैं, और are they even thinking, वो सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं. Those are the four questions. So we'll watch the video. मैं आपसे फिर से ये questions पूछूंगी after we stop the video, and we'll discuss that a little bit on chat. So we can move to the next slide. Please, yes. um, so by some way I'm not able to play it. um, क्या आप प्ले कर सकते हैं अपने एंड से? आई विल जस्ट बी चेकिंग एट द टेक्निकल इशू. Okay, let me just open it up. Just give me one minute. श्योर श्योर. Should I stop sharing? Just 1 second. I think I'll have to share my screen. Yeah. Uh, yes, Devashi, I'll share my screen.
Okay. If you are not able to hear it, please tell me. I'll have to. So they come up with this little guy, and it's clear so you can see what goes on inside. Mr. Carter's goal was to explain that to make the bulb light, electricity has to flow through the filament in a cycle, in through the base of the bulb and out the side. Have inside the light bulb basically enough things to make a complete electrical circuit. If you've got the electricity going in, let's say where the threaded base is, it'll go in through that we looked at, up through the filament. Okay, Devashri, can the audio be heard? Or should I start again? No, we are able to hear you. You're I able hear to the video. Yeah. You're able to hear the video? Okay. I'm going to start it. Through the filament doing its trick and out the base. And that's what I'm starting it again. Again, questions ye hai, teacher, what is the topic that the teacher is teaching? Learning to light the bulb. What is the topic that the teacher is teaching? Instructions क्या दिए जा रहे हैं? Students क्या कर रहे हैं? और are the students thinking? वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? So let me start the video again. Though challenging and difficult, is only the first step toward a scientific understanding of electricity. So they came up with this little guy, and it's clear so you can see what goes on inside. Mr. Carter's goal was to explain that to make the bulb light, electricity has to flow through the filament in a cycle, in through the base of the bulb and out the side. Have inside the light bulb basically enough things to make a complete electrical circuit. If you've got the electricity going in, let's say where the threaded base is, it'll go in through that wire that we looked at, up through the filament doing its trick, and out the base. And that's what, electrical circuits are. They're loops, all right? Yeah, okay. Here's some wire. I may not have given you enough. I'm going to give you 4 pieces of wire, at least to start with. Then I'm going to madly start cutting some other pieces of wire. See if you can come up with a way to get all 3 of them on at once. What's that? Jennifer followed up what she was taught with hands-on activities designed to reinforce the concepts. Connect to this. Yeah. Jim Carter spent almost a month covering advanced topics in electricity, in addition to batteries and bulbs. Just remember, it's got to make a circuit. It's got to make a complete loop. Okay. So ये short video था. I'll ask questions again. Firstly, what is the topic that the teacher is trying to teach in this class? Okay, electricity circuit, topic is electricity, to make bulb and flow. Okay, great. Topic is electricity. ठीक है. So that is the first question. Second question. Topic is electricity, topic is about how to make a circuit. ये आप काफी लोगों ने ये बोला है. तो second question मेरा ये है कि टीचर ने instructions क्या दिए? Students को, what were the instructions given? To do themselves and find out, was it that to try themselves, look carefully, practically do this work, 4 wires connect, perform the same. Okay, how to make a circuit. Okay. ठीक है. Students क्या कर रहे थे? What were the students doing in this class? Students were following instructions, connecting wires, just following instructions. Okay, good. Students are good listeners. Following instructions. Thinking and following. Okay, practicing the instruction. Great. Very good. Okay. Most important question now. Were the students thinking? Okay.
मुझे ऐसे रिवर ऑफ नो दिख रहा है, तो सम मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग नो, सम ऑफ यू आर सेइंग यस. तो आप अगर नो बोल रहे हो या यस बोल रहे हो, गिव अ रीजन ऑल्सो विद इट. नेक्स्ट, if you are saying no, tell us why you think that the students were not thinking. If you are saying yes, आपको क्यों लगता है कि students they were thinking, they were just following instructions. Okay, not thinking, just following, focused only on doing. Okay, they were waiting for the result. Yes, they were waiting के bulb कब light होगा, following instructions. Great. Okay, ठीक है, great. तो अगर आप ऐसे क्लासरूम में, इफ यू वॉक इन, आप ऑब्जर्वर की तरह अगर आप इस क्लासरूम में चले जाए, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें हो रही है. देर आर रिसोर्सेज, देर सो मच मटीरियल, टीचर इज वॉकिंग अराउंड, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद देयर हैंड्स. आपको ऐसा लगेगा, सबको, किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, विच इज ट्रू. एक्टिविटी बेस्ड, इट इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम, but is it active learning? And we'll understand the meaning of active learning. थोड़ा discussion करने के बाद we'll talk about what is the meaning, what is the difference between activity based learning and active learning. Okay. Okay, so yes, no, mixed responses, not exactly, active learning, no. Okay, ठीक है. So हम इसके डेफिनेशन तक आएंगे. आई नो अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिव नहीं है, एक्टिव है. So that's okay. The confusion is good. Let's move to the next video. Next video में क्या हो रहा है? 1 month later, the teacher is watching the students. They are trying to answer some questions on this topic. The students are trying to answer some questions. उन्हें कुछ questions पूछे जा रहे हैं, and the teacher is watching them from a different room. आपको क्या लगता है? 1 month later, will they be able to answer questions about electricity, about circuits? What do you think? We are going to see in the next video. Yes, they do. Okay, no. Okay, ठीक है. So let's watch the next video and see. The question is, will the students be able to answer questions about circuits and this specific topic 1 month later? We interviewed Jennifer 1 month after the lesson. Mr. Carter observed the interviews on a monitor in another room. You probably did. If you had like a battery and you wanted to hook up the battery to make the light bulb light up, what might you do? You just need you need wire connected to the battery and to the light bulb. Could you draw for me how you would do it? Jennifer is concerned that without the equipment used in class, the bulb can't light. You can just show me how you. Can I use something to plug screw light bulb into? Why do It's the light bulb itself. like the thing you use in class, like this thing here? Yeah. Well, why would you need this part? I don't know. You can't. It just won't work. And now here you started twisting there. And why did you do that? Just to keep the wires in contact with each other. Okay. Can we try to light up the bulb and see? I'll hold it for you. Okay. Jennifer didn't light the bulb, No. It didn't work. Okay. but even more surprising was that the mistakes she made were exactly the same ones she made before the lesson. And then they'd be both connected to the bottom of the light bulb. Okay. So, was the student able to answer questions about this topic 1 month later? Okay, so you're saying no, not exactly. It was activity-based learning, not active learning. Okay, ठीक है. So this student, no. Everyone is saying no. Okay, क्यों नहीं? क्यों नहीं कर पाई वो? Answer क्यों नहीं कर पाई? और we can watch the video again if you want to see वो कहाँ confused थी. But mainly क्या problem था कि उसे even after doing this activity of building the circuit,
उसने हाथों से किया अपने, वो ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाई? Okay, but why didn't she understand properly the yes. Not interested, no. Okay, ठीक है. But why is she confused? करने के बाद भी उसके वो confusion क्यों है? So there were many, बहुत सारे concerns थे जो क्लास में हुआ. There were a lot of issues. एक तो just like many of you are saying कि she was just following instructions. वो एक महीने पहले जो एक क्लास हुई थी वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे बच्चे. दैट इज वाई अगर आपने इस वीडियो में नोटिस किया, वो सोची थी कि अरे मेरे पास वो एग्जैक्ट वायर नहीं है, मेरे पास वो एग्जैक्ट कंपोनेंट्स नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी सर्किट. शी ओनली फॉलोड इंस्ट्रक्शंस. सो कमिंग बैक टू माय फर्स्ट अर्लियर क्वेश्चन, डू यू थिंक स्टूडेंट्स वर थिंकिंग? जो क्लास में हो रहा था, वर द स्टूडेंट्स थिंकिंग एट दैट टाइम, or were they just doing? Did not doing. No. Okay, great. और एक और जो प्रॉब्लम था वो क्लास में, जो मैं आपको डायरेक्टली बताने वाली हूँ. अगर आपने नोटिस किया, ये जो टीचर है मिस्टर कार्टर, जो टीचर थे इस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, वो साथ में वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे वायर्स का कॉन्सेप्ट, सर्किट का कॉन्सेप्ट. उन्होंने बल्ब्स दे दिए थे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी. स्टूडेंट्स वर डिस्ट्रैक्टेड, वो बल्ब्स देख रहे थे, वो उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे. उसी दौरान टीचर्स एक्सप्लेनिंग, देन टीचर्स गिविंग देम वायर्स आल्सो, टीचर्स टेलिंग देम हाउ टू मेक द सर्किट आल्सो, एंड गिव इंस्ट्रक्शंस. करेक्ट. ये सब बहुत they were amazed to see he didn't explain the components very well. बहुत haphazard, बहुत confusing instructions थे. And this is where classroom management comes in. There was a lot of chaos. इसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, इस क्लास में क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए था? व्हाट शुड द टीचर हैव डन डिफरेंटली इन द क्लासरूम इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? First, explain. Initially, only explanation. Very good. So start with an explanation. Ask questions to students. Then give instructions. So explain the concept, then give the material, or first give the instructions, then give the material. क्योंकि क्या होता है, because students were so distracted with सब नया material मिल गया उन्हें. They were so distracted that उनका attention था ही नहीं explanation पे या instructions पे. So classroom management was a big issue in that video, in that classroom. Great. So अब सभी you are giving great examples in the chat box. So that's great. Let's move on to the next video. Same process हम follow करेंगे. First we will watch what happens in the classroom. Then we will see if they are able to remember 1 month later. And इस बार आप खुद सोचिए. We'll watch both the videos. You will have to tell us what was different in this video. So let's move to the next video. Same process, same questions. आपको देखना है what are the instructions, what are the teachers saying, what is the topic, are the students thinking. Different classroom, different teacher. We took the pre-instruction quiz yesterday, and you made some predictions about which of those systems you felt would actually light the bulb. So you're going to get a battery, a bulb, and a piece of wire, and we're going to figure out how to make it light. Now, what's going to be very important through this whole process is for you to write down everything that you do with that battery, bulb, and wire. Things that you think are silly and things that you think are not so silly, okay? Things that work and things that don't work. Because you learn a lot from the ones that don't work as well as the ones that do. Questions? So we're just tinkering around with ways to see which way the light bulb works. Right.
No, just random putting things Just on. random putting things together? Is this plastic stuff around it supposed to dampen the flow of electricity? So if I put it on here, it's different than putting it on the tip? Would you expect it to be different? I don't know what kind of effect the rubber has on it. Maybe you need to experiment with that and see how that does affect the whole system. Teachers encourage students to work in small groups. What did you do that worked? You touch it to the bottom and the top. That's all it has Like to do. this and like this. Yeah, But then what do you do with the bulb? put it on the wire. ओके तो ये था क्लासरूम का वीडियो सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन मिस्टर कार्टर्स क्लास एंड इनका जो क्लास था सिमोन है इस टीचर का नाम क्या क्या फर्क था क्या डिफरेंसेस थे बिटवीन द टू क्लासेस clear instructions okay very clear instructions first was instruction okay prior knowledge check one of you said कि पहले उन्होंने prior knowledge check किया कि आपको क्या पता है आपने एक assessment दिया था previous day पे then the teacher gave them instruction resources नहीं दिए told them कि आपको figure out करना है खुद कि ये circuit कैसे complete होगा when will the bulb light up they did not give the resources to them अगर आप इस क्लास में जाके ऑब्जर्व करेंगे आपको लगेगा कि ये एक्टिविटी बेस्ड तो हो नहीं रहा है सब बच्चे बैठे हुए हैं सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं टीचर इज टॉकिंग तो ये कन्वेंशनल एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच नहीं लगेगा आपको बट द क्वेश्चन इज देन were the students thinking yes the students were thinking first they were given time to absorb the instructions फिर उन्हें resources दिए गए कि अभी आप figure out करो कि ये circuit कैसे full होगा the teacher was walking around asking questions to them the students were asking questions to the teacher was giving them answers to their questions ताकि वो figure out कर पाए कि circuit को complete कैसे करना है the classroom management was very good in this classroom उन्होंने पूरा प्लान करके ये क्लास किया कि पहले हम प्री असेसमेंट करेंगे फिर हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे फिर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे फिर हम मटेरियल देंगे बच्चों को एंड देन द स्टूडेंट्स विल वर्क ऑन देयर ओन विद देयर फ्रेंड्स और इंडिविजुअली एंड वी विल वॉक अराउंड एंड वी विल आस्क देम क्वेश्चंस एंड वी विल एंश्योर कि वो सर्किट बन जाए वेरी वेल प्लान्ड लिस्ट ओके सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वीडियो आपको क्या लगता है will the students know 1 month later will they be able to answer questions about this topic okay no yes okay most of you are saying yes ठीक है so let's move on to the next to this video and we'll see what differences there are Learning to light the bulb, though challenging and difficult, is only the first step toward a scientific understanding of electricity. These students not only can explain how to make the connections, but they're moving forward and asking some very fundamental questions in terms of like what makes the light and where does the electricity go inside the bulb. What did you say, Jake? Well, you know that the electricity travels through the bulb somehow. Because in one of those conductors and out the other. Okay, yeah. It actually stops at the bulb because that's where, otherwise if it went straight through it, it wouldn't light. Craig says it has to stop there because the stopping makes it light. That's what you're saying, right? But where exactly are you saying that it stops? Like at the top of the gold or the threaded part? Well, it is continuous, but it's got to stop. It breaks there, like it breaks. Well, not really breaks, but it like divides? yeah, it like diverts basically. It goes off the path of the natural path of just the wires connected, so it like goes somewhere else. Okay, Like a fork or something. I think it goes up and then goes like that and then comes back down, but that's just my opinion. But maybe that's what it is. I don't think that the electricity stops in the light bulb because if you connect two light bulbs together, like with wires, they both light up.
If electricity stopped, then the second one wouldn't be able to light up. So now my question is, did these students understand? Did they learn? Did they meet their learning outcome? इस डिस्कशन में हमने देखा कि नॉट ओनली वर दे एबल टू मेक दैट सर्किट, वो तो उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको थी, बट दे वर गोइंग फर्दर। उनके क्वेश्चंस बहुत डीप थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इज इट स्टॉपिंग एट दैट बल्ब, इज इट स्टिल फ्लोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वायर। तो नॉट ओनली डिड दे अंडरस्टैंड कि वो सर्किट कैसे बनता है, बट दे वर एबल टू डू हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑल्सो। सो द क्वेश्चन देन इज कि मिस्टर कार्टर का जो क्लास था और मिस सिमोन का जो क्लास था अभी जो हमने देखा, what were the differences? So these are some questions for you to think about. Why did things not work out in Mr. Carter's class? जो पहला था, what was wrong with it? वो हमने already discuss कर दिया है। Mainly ये था, classroom management issues थे। उन्होंने plan करके ये क्लास नहीं किया था। Instructions, resources, explanation सब एक साथ हो रहा था। इंस्ट्रक्शंस भी ज्यादा क्लियर नहीं थे, उन्होंने बोल दिया कि ये अभी प्रोसेस फॉलो कर दो, तो उन्होंने फॉलो कर दिया, बस उतना ही हुआ। मेनली मिस्टर कार्टर को लगा कि अगर वो बोल दे बच्चों को कि ऐसा होता है सर्किट, दैट स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। बट द प्रॉब्लम वाज कि जैसे आपने देखा, स्टूडेंट्स वर डिस्ट्रैक्टेड एंड दे डिडंट नो कि उन्हें एक्चुअली क्या, वो उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दिए, बट देयर वाज नो थिंकिंग। They were just doing, they were not thinking. These were some of the biggest problems in Mr. Carter's class. Now we look at the second question. मुझे आपसे जानना है अभी, जो मिस सिमोन का क्लास था, जो हमने दूसरा क्लास देखा, why was it वहां डिस्ट्रैक्शन या केओस क्यों नहीं था? कुछ टीचर्स ने ये बोला कि फर्स्ट क्लास में बहुत केओस था, सेकंड क्लास में केओस क्यों नहीं था? प्रॉपर प्लानिंग था, मटेरियल गिवन लेटर, classroom management. So proper planning is the main thing. Very well planned class. उन्हें exactly पता था कि पहले प्री असेसमेंट करना है, फिर एक्सप्लेनेशन करना है, फिर इंस्ट्रक्शन देने हैं, फिर रिसोर्सेज देने हैं। एंड लास्टली जो मेन क्वेश्चन है हमारा इस वेबिनार का, व्हाई डिड स्टूडेंट्स लर्न इन मिस सिमोन्स क्लास बट नॉट इन मिस्टर कार्टर्स क्लास? क्या फर्क था, मेन क्या फर्क था कि मिस सिमोन की क्लास में उन्हें सब समझ में आ गया, बट मिस्टर कार्टर के क्लास के बच्चे एक महीने बाद नहीं बता पाए हाउ टू मेक अ सर्किट? एक्टिवली इन्वॉल्व। सो सम ऑफ यू आर सेइंग दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व। लर्निंग बाय डूइंग तो फर्स्ट क्लास में भी हुआ ना। इफ यू आर सेइंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, वो तो पहली क्लास में भी हुआ। दे डिड इट, उनके पास थे बल्ब्स, थे वायर्स, थे सब कुछ था। दोनों क्लास में उनके पास मटेरियल था, दोनों क्लास में वो हैंड्स ऑन लर्निंग कर रहे थे, हैंड्स ऑन। सेकेंड क्लास में ये क्या फर्क था? What was the difference that students remembered 1 month later also or understood it so well कि वो higher order question भी पूछ पा रहे थे उसके बाद? Interactive, activity based learning, ये सब दोनों क्लासेस में था। Classroom management was a little different, but एक मेन चीज है जो हमारा मेन क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्टिव लर्निंग में क्या फर्क है? Can someone tell us that? What is the difference between activity-based learning and active learning? दोनों क्लासेस में hands on learning हो रहा था. What is the difference between activity and active? So you have to think about one question that I had asked earlier. जो मेरा last question था हर वीडियो पे. Were the students thinking?
in which classroom were the students thinking? And in which classroom were they not thinking? Okay. So many of you are saying in the second class they were thinking. Okay. So now, can you tell me the definition of active learning? In Miss Simone's class, there was active learning happening. Activity based तो हो ही रहा था, but active learning भी हो रहा था. What is the meaning of active learning? When children can think and do. Correct. So the main point is कि अगर बच्चे without thinking they are doing things, जैसे मिस्टर कार्टर के क्लास में हुआ, बिना सोचे वो चीजें करते, हैंड्स ऑन था बट माइंड्स ऑन नहीं था. मिस सिमोन के क्लास में हैंड्स ऑन तो था ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वाज माइंड्स ऑन, विच मीन्स के बच्चे थिंक कर रहे थे, स्टूडेंट्स वर थिंकिंग. मिस सिमोन वाज नॉट थिंकिंग फॉर देम. द स्टूडेंट्स हैड टू फिगर आउट कि सर्किट कैसे बनाना है. So let's go to that slide and see why students learned in Miss Simone's class. One, very importantly, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, classroom management. And second, there's a difference between activity. Just doing by your hands does not mean कि आप सोच भी रहे हो. Active learning experiences means that I am thinking and the activity is happening in my mind. If the activity is happening in my mind, it is active learning. That is why you can do debates, you can do discussions. हर बार hands-on learning नहीं होना होता है. Even if you just do debates and discussions and students are thinking, that also is active learning for students. So, what are active learning experiences and how is it different from activity-based learning? इसका आंसर ये है. तो आप 1 मिनट लेके ये पढ़ लीजिए. What is the difference? Correct. So many of you are saying active learning means students are thinking, and that is the main definition. अगर आप एक क्लास में जाओ और आप देखो कि बहुत chaos हो रहा है, बहुत बच्चे बहुत कर रहे हैं hands on learning, that doesn't mean कि they will learn. It means कि they will do. And शायद learning हो भी सकती है, but the main what you have to see, what you have to make sure is that वो करते करते सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं. अगर वो सिर्फ instructions follow कर रहे हैं, then that is not active learning. That is not going to lead to learning. And when we say students should be active, it means कि students' minds should be active. हमेशा hands नहीं होने होते हैं. It can also be their minds that are active. So ये दो एग्जाम्पल्स हैं. एक हमने देख लिया है. एक्टिविटी मीन्स कनेक्टिंग वायर्स टू मेक अ सर्किट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस. टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, स्टूडेंट्स हैव फॉलोड देम, दैट इज एन एक्टिविटी. बट व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज व्हेन स्टूडेंट्स आर एबल टू कम अप विद द सर्किट ऑन देयर ओन. उन्हें खुद सोच के, खुद करके दे फिगर्ड आउट कि कैसे ये सारे कंपोनेंट्स साथ में काम करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज यू टेल देम हाउ टू डिवाइड. आपने उनको ब्लॉक्स दे दिया, आपने बता दिया उनको प्रोसीजर क्या है डिविजन का. दैट इज एक्टिविटी, दैट इज हैंड्स ऑन. बट माइंड्स ऑन जब तब होता है, एक्टिव लर्निंग तब होता है व्हेन स्टूडेंट्स कैन कम अप विद डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी डिवाइडेड. वो खुद कर रहे हैं, वो खुद सोच रहे हैं. द टीचर इज नॉट थिंकिंग फॉर देम, द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स. So before we end, before we stop talking about this question answer के लिए अभी भी हमारे पास टाइम है, but we'll do a quick poll to understand, to ask you a question to understand what you have taken away. Devashi, do I need to stop sharing my screen for this? Yeah, let me share the screen and take everybody through the poll. Okay, stop sharing.
Yeah, is the poll visible? तीन एग्जाम्पल्स है ऑफ लर्निंग. आपको ये देखना है कि आउट ऑफ 1, 2 and 3 विच आर active learning experiences. Remember कि thinking has to happen along with doing, or just thinking has to happen. That is the meaning of active learning. We are ending the poll now. I hope maximum teachers have responded. Okay. So 38% teachers are saying कि 2 and 3 both are active learning. Some 28% teachers are saying कि 1 and 2. Only 2 के लिए 21% और सिर्फ 3 के लिए 13%. Okay. Active learning is when students are thinking on their own. Option 1, which is watching a video on the Second World War in a history class, ये बहुत passive activity है. You can watch a video and not think about it. आप सिर्फ अंदर ले सकते हो, आप information ले सकते हो without thinking. That is why after a busy day, we want to watch TV, we want to watch something on our phone, क्योंकि उसमें thinking सबसे कम होती है. Unless the teacher is asking questions, thinking बहुत कम होती है. So 1 is not active learning. 2, which is creating a model, creating a replica, मतलब वो copy करके pyramids बना रहे हैं history class में. अगर वो copy करके, because replica बना रहे हैं वो, अगर वो कर रहे हैं, तो then that is not active learning, because they are just like वो circuit के example में, वो सिर्फ steps follow कर रहे हैं. What is active learning is when students are thinking. So, जो option 3 है, when they are discussing कि folk tales का effect क्या है हमारे, folk tales वो होती है जो stories होती हैं जो हम orally बताते हैं, जैसे अकबर बीरबल की stories folk tales हैं, old stories होती हैं जो orally बताई जाती हैं. If students are discussing कि ये folk tales का क्या महत्व है हमारे modern society में, that means they are thinking. And वो हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो बहुत थिंक कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट एक्टिव लर्निंग इज. सो इट्स अ थोड़ा न्यूआंस टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये, बट होपफुली ओवर टाइम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्टिव लर्निंग के बीच में जो फर्क है बहुत क्लियर हो जाएगा. सो yes, Debashri, we happy to take questions and have some discussions around what teachers want to know. Sure. Before we open the floor and give teachers some time to kind of come back with questions, हमारे पास already 2 questions है. Rather one question, which is suitable in class, activity based or active mode? This is a question for you, Ritu. So, activity based can be एक्टिव मोड, मतलब एक्टिविटी बेस्ड को हमेशा एक्टिव मोड होना ही चाहिए. जैसे हमने वो सर्किट एग्जांपल में देखा, एक्टिविटी बेस्ड था पर वो एक्टिव मोड नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे. स्टूडेंट्स आर ओनली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, दे वर डूइंग एन एक्टिविटी विदाउट थिंकिंग.
So the best way to get students to learn is to make them think. Activity based और active mode साथ में जाना चाहिए. And अगर activity नहीं कर पाए, time नहीं है, resources नहीं है, active mode is very important. आप discussion भी कर सकते हो, आप debate कर सकते हो students के साथ. That is going to lead to learning because students are thinking, and that is what is most important. Right, right. I think we have some more question. What's the proactive approach? Teacher Hanuman Singh Champawat has asked this question. Proactive approach, I mean, I think proactive approach is just another term for active learning or activity. Proactive, basically proactive क्या होता है जब हम सोच रहे हैं, हम initiative ले रहे हैं अपने मन में. So proactive is just another name for active learning जहाँ proactively बच्चे सोच रहे हैं because they have to figure out कि circuit कैसे बनाना है. उन्हें instructions नहीं मिल रहे हैं. So proactive is just another word for the same approach. Right. We move to the next question by teacher Rahim Chaudhary. How to bring the adamant learners in the mainstream as part of classroom management? This is it's a very broad question क्योंकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग नीड्स होते हैं बट मेनली लाइक यू सॉ जैसे हमने वो सेकंड वीडियो में देखा प्रॉपर प्लानिंग फ्रॉम द टीचर इज द की. फर्स्ट क्लासरूम में अगर आप ये जो एडमेंट बच्चे हैं जो उन्हें नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे के मटेरियल दे दें, वो शायद नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा एक्चुअली. एंड स्टूडेंट्स नो दिस, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस. बट जब आप उन्हें एक चैलेंज दे रहे हैं कि आप फिगर आउट कर लो, ये मटेरियल है, आप फिगर आउट कर लो सर्किट कैसे बनाना है, एंड देयर इज प्रॉपर प्लानिंग अराउंड दैट. क्या आप उन्हें इनफ सपोर्ट दे रहे हैं, इनफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनफ चैलेंज दे रहे हैं. Planning becomes the most important part in making sure that all students are actively learning. And it's not easy. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्लानिंग कर दोगे सारे, it's a magic key and सब कुछ ठीक हो जाएगा. Of course, it's not easy. आसान नहीं है ये. But when we are planning, we have to think about. Teachers know their students the best. You have to think about इस बच्चे का क्या चैलेंज होगा एंड हाउ डू आई प्लान टू मेक श्योर कि वो फिर भी करे, वो फिर भी सीखे. So I think it comes down to planning, but of course it's not that easy. वो कहने में बहुत आसान है कि it comes down to planning, but that is the first step, I think. Sure. We'll move to the next question. Is there a difference between learning by doing, hands-on learning, and experiential learning? So, no, these are again different words, different terms for the same, for basically saying कि हम experience कर रहे हैं या हम कर रहे हैं. Basically हम करके अगर if we are learning by doing, it is that. Different names. What we are saying is that whether you are calling it learning by doing, whether you are calling it hands-on learning, or whether you're calling it experiential learning, it means that students are doing something, but along with doing with their hands, they also have to do in their minds. That is the crux of it. Sure. We'll move to another question by teacher Brinda Marodia. How can we make sure that active learning is taking place in pre-primary school? Active learning in pre-primary school actually is probably it's the most fun thing that you can do because students of that age have a lot, वो सीख रहे हैं, they are learning about the world around them and they are very curious and उनके बहुत opinions होते हैं about many things. सारे opinions, सारे facts of course correct नहीं होंगे, but one of the easiest ways to do active learning in pre-primary is to talk with students. When you are reading them a story, अगर आप story time में showing them a story, holding up the book, stop at every page, ask them how is the character feeling, क्या हो रहा है इसमें, अगर आप होते यहाँ तो क्या करते, what is going to happen next, can you see the face on the
Can you see the picture on the page? क्या दिख रहा है आपको? क्या? What is the feeling? So pre-primary में active learning is possible. I mean, the first thing is conversations, and I know कि बहुत बार ये fear होता है कि pre-primary में if we give students too much time to talk, फिर वो तो chaos हो जाएगा. But that is not true because students do understand the meaning of rules and do understand the meaning of discipline, and they, unless they think, अगर वो सोच नहीं रहे हैं, learning is not going to happen, especially at that age, because that is the quickest, that is the time when their brains develop the fastest. So for pre-primary, research back suggestion is कि let students talk, let them express their opinions. आपको भी हंसी आएगी, उन्हें भी हंसी आएगी. They may say wrong things, they may say silly things, but the most important thing is that they're thinking. Sure. And we'll just take one last question because बहुत सारे questions है, but they're all similar and I'm sure कि कुछ questions already answer हो गए हैं. So I'll take last question. This is for you, Ritu. Please suggest some active learning strategies. So like I think in yesterday's webinar that we talked about making students thinking visible. And when we talk about active learning strategies, it's basically we are saying that students have to think and students have to show what they're thinking. If I have to say one strategy, one of the best strategies is don't give students information. अगर वो बोले कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है और what is the function of a wire or what is the function of the bulb, the best way of asking them is what you tell me, try it out and tell me what it is, figure it out. I've given you the resources, or go and read, जाके पढ़ो, जाके try करो. But the crux of it is कि the teacher should ask questions, the student should answer. उल्टा नहीं होना चाहिए. It shouldn't be कि students आपको पूछ रहे हैं और आप answers दे रहे हो. Because when you are giving the answer, students are not thinking. And that is a difficult shift to make. But I know that I have done it. I know that many teachers that I've worked with or we have worked with have made this change कि हम answers नहीं देंगे आपको. Answers है, textbook में है, हम discussion करेंगे. I will ask you many questions and you will come to the answer. But I will not give away the answer to you, because as soon as I give away the answer to you, you stop thinking. Difficult change hai, but it's the best way. Right. And Ritu, one last thing that I want to understand, and I'm sure a lot of teachers, a lot of language teachers are also with us, that because language has been like in one way, direction subject, how can they actually inculcate these active learning things in a language classroom? So language is about using the language. Unfortunately, आजकल क्या हो गया है? Language has become about memorizing the story. Language has become about हम grammar rules रट के आ जाए, apply कर दे. But that is not what finally language का use क्या है? Language का use है कि हम communicate कर पाए. Clearly, spoken language में, written language में हम communicate कर पाए. And the best way of learning language is to use it. So when we say कि how do we make language learning active, it's important to read stories. Stories are important, grammar is important, वो सब important है. But along with it, giving students chances to talk. And I think मैं बार-बार वही बोल रही हूँ कि as long as students are talking, they are using the language. So, and I'm not saying कि उन्हें क्लास में बात करने दो. अगर आप उन्हें कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, like simple future tense, give them a chance to talk about हम 3 महीने बाद ये करने वाले हैं English में. Yeah, if you are giving them you're teaching them how to ask good questions, then create a situation जहाँ वो जाके लोगों से questions actually पूछ सके. या तो आप role play करो classroom में. The point is कि they are thinking about the language, they are using the language, and that is how language becomes active. Language is not about reading, only remembering grammar rules. It's about using the language and talking in that language. That is how language becomes active. Thank you so much, Ritu. This was indeed
like a session that I'm sure all the participants over here would remember day by day and slide by slide. I think you and Anirudh have taken all the participants, you've taken them quite deep into thinking, and we have actually stressed upon each and every um, nitty-gritties of learning outcome. And बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्पेशली हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, like active learning, experiential learning. I think we could actually kind of dissect them very well during these 3 days, and I can say that I have learned so much, and I can vouch it for the others also. We have been getting really good reviews, and also the chats that the teachers have been posting. I'm sure everybody would have learned from these 3 sessions, and this is for all the teachers, that if you can share if you can make your learning outcomes and the way you prepare any topic, जिस तरीके से हम लोगों ने first second day पे किया, and share those samples with us. We will share it with Things Education, and that will be like a true reward for them and for us also, to understand that you have been able to take the learning of these sessions in your classroom. So I will request all of you to kindly, kind of do these activities in your own classrooms and let us know about your experience. For everybody, just wanted to inform you that the certificate for this course, for this webinar, a lot of you have been asking for it. We will now be putting these 3 days webinar into our NEP series, and I will inform you maybe tomorrow, and we'll share the link. You actually have to go through these 3 days session, then take the certificate, and then we can actually, you can avail the certificate like that. So with this, I will just launch the feedback. Kindly give your feedback to us. It's important. Thank you so much. With this, we conclude today's webinar. Thank you so much, Ritu, and kindly convey our regards for a thank you to Anirudh as well. It was great having Things Education present, everything that you had for learning outcome with the teacher app. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Devashi, for having us. And thank you to all the teachers for such enthusiastic participation. It was really nice.